Would you recommend switching to a contract job next year given the recession? Do banks provide mortgage on a fixed term contract? Definitely not. वैसे तो 2 हफ्ते के अंदर सबको निकाल दिया जाता है. Hey guys, welcome back to the channel. आज है another Thursday, so it's time for No Filter Thursdays और आज हम बात करने वाले हैं सिमरन से अबाउट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे हमें इंस्टाग्राम पे, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस करेंगे. जो टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस है वो थोड़े से मैं आंसर करूंगा बिकॉज आई एम हैंडलिंग ऑल द टैक्स, एंड सिमरन विल आंसर अबाउट हाउ टू गेट कॉन्ट्रैक्ट जॉब, सैलरीज वगैरह वो सब डिस्कशंस करते हैं. So the first question, and this is the question that is asked by at least 10 people, where to look for contract job? कोई ऐसी स्पेशल वेबसाइट या कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है. The most important part, like the most important person to reach out for contract jobs is a recruiter. And वो recruiter कहाँ से मिलेंगे? LinkedIn से मिलेंगे. There is no shortcut, there is no website. You just have to reach out to recruiters and they'll help you get a contract job in the US. And एक चीज पहले थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देते हैं. जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं. एक होता है जो फिक्स टर्म फुल टाइम जॉब्स होती हैं, बट बिकॉज उनका 1 साल का टर्म होता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. जैसे मेरी जॉब थी वॉलमार्ट के अंदर, एंड सिमरन की जैसे जॉब है जिसमें फिक्स टर्म भी हो सकता है, फिक्स टर्म नहीं भी हो सकता है, बट इट्स कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट्स ईदर आर्ली पेड और टैक्स कट के नहीं आ रहा है. कोई सीपीपी कट नहीं रहा, कोई ईआई कट नहीं रहा. सो मेरी जो वॉलमार्ट में जॉब थी दैट वाज वेयर टैक्स सारा कट रहा था, बट 1 साल का मेरा एक फिक्स टर्म था जो कि बाद में कन्वर्ट हो गया था फुल टाइम के अंदर. बट सिमरन का जो है उसके अंदर टैक्स कट के नहीं आ रहा है एंड देयरफॉर इट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड. एंड दोनों का जो प्रोसेस है वो सिमरन ने भी लिंक्डइन से जॉब ली थी, मैंने भी लिंक्डइन से जॉब ली थी, और फुल टाइम जो करते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं. सो इट्स नॉट वेरी डिफरेंट. How to get US contract jobs from Canada? थोड़ा सा different है. So is there any difference in US contract jobs versus Canada contract jobs? See, US contract job, Canada contract jobs, आप LinkedIn पे जाओगे, you filter according to your search, आपको multiple options दिखेंगी. The only difference is कि reaching out to recruiters directly is the only way, and recruiters especially who deal in such kind of jobs. मतलब लिंक्डइन पे ऐसे सर्च करके रिक्रूटर्स इन यूएस, थोड़ा सा रिसर्च फिल्टर करनी पड़ेगी, थोड़े लोगों से बात करना पड़ेगा, बिकॉज रिक्रूटर्स जो होते हैं दे बिलोंग टू अ बिग फर्म. तो वहां पे इफ यू से कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है, दे विल कनेक्ट यू विद समवन who deals in such jobs. So the best is to network with recruiters here. हाँ, तो थोड़ा डिफरेंट होता है ये वर्सेस. एंड फिल्टर मत लगाओ अगर आप यूएस कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हो, फिल्टर मत लगाओ ऑन कनाडा, बिकॉज अगर रिमोट वर्क है या यूएस वर्क है एंड दे आर लुकिंग फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो वाली जो चीज़ है वो मिस आउट हो जाएगी अगर फिल्टर लगाओगे लोकेशन पे. सो दैट्स द ओनली डिफरेंट. इज इट वैलिड ओनली फॉर अ फिक्स टाइम? My contract is not, so मेरा is a full time contract. क्योंकि मेरी कंपनी का ऑफिस नहीं था कनाडा में, एंड दैट वाज द ओनली रीजन आई हैड टू इनकॉर्पोरेट. बट कनाडा में अ लॉट ऑफ कंपनीज हायर अ टाइम्ड कॉन्ट्रैक्ट जॉब, जैसे 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स. अब जैसे मेरी पिछली कंपनी में वी नीडेड एन एक्सपीरियंस डेवलपर इन अ पर्टिकुलर लाइक लैंग्वेज कॉल्ड एज पाइथन, राइट? तो उसके लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया था फॉर 3 months सो दैट ही कम्स एंड ट्रेन्स अस, और जो हमारा गैप है नॉलेज का उसको फुलफिल करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू गेट बेनिफिट्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब? बेनिफिट्स 2 तरह के होते हैं, लाइक एक हो गया लीव्स हो गई, एक हो गया मेडिकल हो गया, राइट? अब मुझे मेरी क्योंकि फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट जॉब है तो मुझे लीव्स पूरी मिलती है. लाइक आई गेट माई सिक लीव्स, आई गेट माई पेड वेकेशन डेज, I get everything that, but जो benefits हो गए इंश्योरेंस वाले, मेडिकल इंश्योरेंस, डेंटल इंश्योरेंस, वो मुझे नहीं मिलती है. So we are paying about $320 for the two of us, क्योंकि मैं भी सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो हमें बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, कोई भी कंपनी कवर नहीं कर रही है बेनिफिट्स, एंड so we are paying $320 a month for that. Most contract jobs in Canada, जितना भी मैं क्लाइंट से बात करता हूँ जो भी है, it's hourly rate and there are most times no benefits, and there are no leaves as well, because it's an hourly rate. If you work 4 hours you'll be paid, let's say $100 an hour to $400, and if you are sick then you don't get paid for that day in most of the contract jobs. So that's the downside of going to a contract job. Yes, it pays well, so you need to make sure that you're negotiating the salary a little bit better, ताकि जो benefits नहीं मिल रहे और जो leaves नहीं मिल रही उसको compensate करा जा सके. 100%. Is it difficult to get another job once previous contract is over?
आई डोंट थिंक कि इतना डिफरेंट है एज कम्पेयर टू फुल टाइम जॉब. अगर आप यू लूज अ फुल टाइम जॉब या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका नेटवर्क इतना बड़ा होता है कि यू लुक फॉर अनदर जॉब. ये नहीं होता कि आज मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो आई स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम अ जॉब फ्रॉम टुडे. नहीं, मैं कम से कम 1 महीना पहले देखना शुरू कर दूंगी. एंड समटाइम्स कंपनीज रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल. प्लस स्किल्स जो डेवलप करे हैं वो जो फुल टाइम में करे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में करें, कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा फास्ट पेस ज्यादा होता है, तो यू माइट डेवलप मोर स्किल्स देन यू वुड यूजुअली इन अ फुल टाइम रोल. अब ये generalize नहीं कर सकते, but skills are more important when you are looking for another job. So yes, you'll probably have to find another job अगर contract खत्म होता है, but it's not very different from finding a job in general. Next question, will it be possible to get contract jobs on study visa? I don't think companies also give contracts, but I would suggest not to do that. Yeah, because वो काउंट नहीं होता टुवर्ड्स वर्क परमिट, वो काउंट नहीं होता टुवर्ड्स, प्लस यूएस कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो कनेडियन एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा. ये भी क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा है कि क्या हम ऑन वर्क परमिट यूएस कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स कर सकते हैं. यू शुड नॉट टेक एनी पंगा विद कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स व्हेन यू डोंट हैव अ पीआर. पीआर जब हो जाओगे देन यू कैन एक्सप्लोर दीज थिंग्स, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट काउंट्स टुवर्ड्स पीआर, कैसे रूल्स चेंज होते हैं. सो जस्ट गेट योर पीआर एंड देन लुक फॉर कॉन्ट्रैक्ट जॉब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच एक्सपेंसेस कैन यू क्लेम. नाउ फॉर नाउ वी आर नॉट क्लेमिंग अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस because सिमरन के उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते हैं. बट यूजुअली इफ़ यू फॉर इंस्टेंस फॉर योर कॉन्ट्रैक्ट जॉब यू नीड एन ऑफिस. घर में काफ़ी ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है एंड यू नीड टू गेट एन ऑफिस, तो वो ऑफिस को यू कैन एक्चुअली डिडक्ट फ्रॉम योर एज एक्सपेंसेस. इफ़ यू फॉर इंस्टेंस रिक्वायर अ लैपटॉप, इफ द कंपनी इज नॉट गिविंग अ लैपटॉप, यू रिक्वायर अ लैपटॉप. So all the expenses that you are directly using towards your job can be deducted, and I would highly recommend that you talk to a licensed CPA or a tax consultant when you are a contractor, so that you know that you are doing the right things. We don't do our taxes, even though we have the knowledge of doing it. We don't do our taxes because we don't want to make a mistake, and it's always better to pay someone who is an expert in what they are doing. So how do you know if you are being offered a fair rate? The best answer is कि LinkedIn पे कभी-कभी jobs का लिखा होता है कि this is the approximate. And I think the best resource is to check out Glassdoor. You'll have a very fair idea कि इस job के लिए कितना pay करती है company. And I think that's the only way to know. और अपने आप को undersell मत करना कभी भी. But sometimes even if you're getting a less salary, but the company is really good and you can see your growth there, go for it. एंड कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ जो मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा, डोंट गो फॉर, अगर एक फुल टाइम जॉब है और एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, दोनों अगर $100,000 दे रही हैं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर विल बी एक्सपेंसेस एज वेल, अनलेस यू वांट टू सेव टैक्सेस एंड वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे. बट यू शुड हैव एटलीस्ट 30 to 40% मोर on a contract because you also not get a lot of things that you get in a full-time job. Benefits नहीं मिलते, EI नहीं मिलती, that's the biggest thing. You don't get employment insurance वहाँ पे. So if you lose your job, you don't get the $2,000 from the government unless you are deducting your, you're giving yourself a salary from the incorporation that you created for the contract. So just 30 to 40% more than full-time jobs should at least be the benchmark. Simran ka was almost double, right? So that's where you can make a decision on. But yeah, you also lose a little bit of safety. How do taxes work in a contract job? So taxes की मेरे ये हेडेक नहीं है ना, मेरा डिपार्टमेंट है, हमने बंदे रखे हैं टैक्सेस करने के लिए. और मैंने भी बंदे रखे हैं. बट सी टैक्सेस बहुत सिंपल होता है. सो इनकॉर्पोरेशन खुलती है जब कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिलती है, इनकॉर्पोरेशन खुलती है. अब इनकॉर्पोरेशन में लेट्स से इट्स अ $150,000 कॉन्ट्रैक्ट. $150,000 में कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं हो रहा है अभी. सो $150,000 सारे के सारे आ रहे हैं एवरी मंथ, बाई वीकली, जैसे भी फ्रीक्वेंसी है. एंड यू ओनली नीड लेट्स से $50,000 फॉर योर एक्सपेंसेस. तो $50,000 जो हम अपने अकाउंट के अंदर लेंगे, दैट विल बी लाइक अ डिविडेंड, या आप सैलरी की तरह पे कर रहे हो अपने आप को. उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स लगेगा जो फुल टाइम सैलरी पे लगता है. और जो बाकी के $100,000 हैं उसके ऊपर यू विल बी चार्ज an incorporation tax of 12.2% if you are in Ontario. So you save a lot of money if you keep as much money in your incorporation, and that's how you save taxes overall. And plus expenses भी होते हैं, right? So ये expenses भी deduct होते हैं, उसके ऊपर 12.2% tax लगता है. इसके ऊपर हमने थोड़ी सी एक वीडियो बनाई थी. अब इसके अंदर एक जो वॉच आउट होता है वो है if your job, if that's the only job that you have done in your incorporation, it can be counted towards something called as a PSB, which is called personal service business. उसके अंदर क्या होता है, अगर आपके पास एक ही जॉब है, फुल टाइम जॉब है, आप इनकॉर्पोरेशन के अंदर से ले रहे हो, या कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, एंड दैट्स द ओनली जॉब, यू कैन बी लायबल टू पे द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स दैट यू वुड
pay if it was a full time job अपने पर्सनल इनकम या पर्सनल इनकम जो आ रही थी तो उसके ऊपर पूरा टैक्स लगेगा. इन केस ऑफ सिमरन शी हैज मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स, सो शी हैज डन मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ शॉर्ट टर्म थे, एक लॉन्ग टर्म है, एंड देयरफॉर इट काउंट्स एज अ बिजनेस. एंड देयरफॉर अगेन आई विल से इफ यू आर अ कॉन्ट्रैक्टर, make sure that you are consulting. कोई बात नहीं, $200, $300, $400 खर्च करके just make sure that you are consulting with a tax accountant and always talk about PSB and make sure that they are guiding you the right way. अब तेरे लिए क्वेश्चन है, do banks provide mortgage on a fixed term contract? If you are an incorporation contract or a fixed term जो expire होने वाला है, if you have not had a renewal, then definitely not. If you are doing a less than 20% down, then in most cases you will not, get a mortgage. If you are doing a 20% down, it depends on the situation, and there are programs and lenders who would, lend on a 20% down. But again, if you are new to Canada and thinking of buying a house and you can't save the down payment, which is 20%, I would not recommend going for a contract job. In fact, इस reason की वजह से जब हमने अपना कॉन्डो खरीदा था, उससे पहले सिमरन को एक कॉन्ट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी आई थी when सिमरन lost her first job. And वो हमने नहीं ली थी because our mortgage agent, because I was not a mortgage agent then, told us that you can't buy a house at less than 20% down if you are a contractor. And that's a really, really important point if you want to buy a house. And therefore we bought the house first and then Simran changed her contract job. And next जो हम घर ले रहे हैं, जो 2 हमने क्लोज करने हैं, कैलगरी का और जो किशनर वाला है, उसमें हम 20% डाउन पेमेंट कर रहे हैं, एंड देयरफॉर वी आर एलिजिबल फॉर द अदर प्रोग्राम्स एज वेल. सो कॉन्ट्रैक्ट में 2 years यूजुअली इन एन इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट यू नीड 2 years ऑफ टैक्स फाइलिंग before you can get a mortgage, at less than 20% down. Otherwise it will be difficult. Is it common to convert contract jobs to full-time jobs in Canada? Yes, it's pretty common, especially जब आप नए नए आते हो. This is very common for new immigrants. जब आप नए नए आते हो, you're looking for something, तो companies क्या करती हैं to mitigate their risk. What they do is शुरू में कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में हायर करेंगी एंड देन गिव अ फुल टाइम थिंग. नवजोत के साथ भी यही हुआ था. वी हैव अ कपल ऑफ मोर फ्रेंड्स जिनके साथ सिमिलर एक्सपीरियंस था. शुरू के 4-5 महीने 6 महीने वाज अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब एंड देन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ फुल टाइम वन. एंड मोस्ट IT people who are working in banks, that's how they start. Scotiabank, BMO, जितने भी बैंक्स हैं वो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट के आर्ली डेट जो होता है उसके ऊपर हायर करते हैं, बिकॉज दे स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड कि बंदा सही है, क्या है, रोल चाहिए नहीं चाहिए. सो इफ यू आर an IT person or a business analyst, IT related, and you are working for a bank or looking to get a job in a bank, most of the times you will be a contractor and then convert to a full time. Is contributing to EI an option? EI is employment insurance, employee insurance, employment insurance. ये full time jobs में होती है. अगर आपकी जॉब चली जाती है full time job, तो अगर आपने enough hours करे हैं तो you get about $2,000 or maximum of $2,000 a month, even if you don't have a job till the time you get a job. लेकिन इसके अंदर जब हम कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जैसे सिमरन का केस है, she will not get any benefits unless she actually, her incorporation actually gives a salary to her, जैसे normal full time salary होती है. Let's say she is earning $150,000 and she pays, let's say $60,000 in salary to Simran. The incorporation pays to Simran. In that case you will have to, और salary के अंदर होता है ये, उसके अंदर structure करना पड़ता है. टैक्स एक टैक्स अकाउंटेंट करेगा and उसके अंदर you will deduct your EI just like you would get from the employer. इस केस में द एम्प्लॉयर इज यू ओनली. एंड CPP भी डिडक्ट होगा. जो पेंशन प्लान होता है, कनाडा पेंशन प्लान, वैसे ही स्ट्रक्चर होगा जैसे पे स्टब बनती है. आई पर्सनली would not prefer that because you pay CPP, you pay EI, and tax advantages कम होते हैं. But again, it's a personal preference, and always talk to a tax consultant, before structuring something like this. But yeah, as is, अगर आप dividends pay कर रहे हो अपने आप को अपने incorporation में से, EI जो है वो नहीं मिलती है. Next question, other than hourly rate, are there other things that you can negotiate in a contract job? I think you can negotiate about the leaves कि आपको मतलब full time मतलब paid leaves, paid sick leaves और paid vacation time थोड़ा सा मिल जाए. The other thing is the length of the contract. You can negotiate like 6 महीने की जगह मुझे 1 साल का contract दो. हाँ, and leaves का most of the times they'll not agree to it, but at least term of the length of contract you can actually get a little bit safety net मिल जाती है. वैसे तो 2 हफ्ते के अंदर सबको निकाल दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगले दिन भी. But I don't think full-time job is like significantly safer than contract jobs because 2 हफ्ते के अंदर किसी को भी यहाँ पे निकाल दिया जा सकता है. It's just that it's a lot more difficult to process an exit if you're a full-time employee. That's the only thing. But उन्होंने निकालना है तो निकालना है. Should you contract as an incorporation or a sole proprietor? Okay, इसका आंसर ना थोड़ा सा डिफरेंट है.
If you are earning $100,000 and spending $100,000 क्योंकि आपको घर के खर्चे के लिए चाहिए, then it doesn't matter because सारा का सारा इनकॉर्पोरेशन के अंदर पैसा आ रहा है और आप अपने डिविडेंड की तरह वो ले रहे हो या सैलरी की तरह पूरा का पूरा ले रहे हो, एंड देन यू आर पेइंग द सेम टैक्सेस जो आप सोल प्रोप्राइटर की तरह दोगे. द ओनली थिंग इज दोनों सोल प्रोप्राइटर भी इनकॉर्पोरेशन भी यू कैन डिडक्ट एक्सपेंसेस, दैट्स फाइन. बट इफ यू आर अर्निंग अ लॉट मोर देन व्हाट यू आर स्पेंडिंग, then definitely incorporation is the way to go because tax advantages are massive because the money that you're keeping in the incorporation that is taxed at almost less than half of what it would if you were taking all the money in your account. But again, मैं बार बार बोलूंगा, talk to a tax consultant. Next question, do you have probation in a contract job? No. Next one is, can we do moonlighting in Canada? For those of you who don't know what moonlighting is, it's basically, उसको negative connotation दिया जाता है, but it's basically working two jobs, in Canada, and definitely you can do that, as long as it's not competing with one another. अपना contract एक बार check कर लेना, उसमें क्या लिखा हुआ है. But I know a lot of people who are doing two jobs, especially contract jobs, right? So अगर एक आध महीने के लिए, if you're an app developer, आप किसी की app develop कर रहे हो, 3-4 महीने का contract उठाया, you also have another job. Obviously, you'll not have a life, which is fine. We also didn't have a life for the longest time, but you can do that. The only thing to consider, as Navjot mentioned earlier, was कि competing नहीं होना चाहिए. मतलब कि RBC का भी contract है और Scotia का भी contract है. That's wrong. Yeah. You will be liable for a lot of legal issues. Okay, this one is interesting. Would you recommend switching to a contract job next year given the recession? Next year, I think, it's my personal opinion. पहले next year शुरू होने दो. See if you can find good offers and see the scenario ki that will fit because no one knows what's going to happen in 2023. Recession is expected. Yes, but what kind of recession? So considering that, I would suggest take a moment and see whether it makes sense for you or not. And one of the guidance that you can actually use is determining कि किस industry में वो contract job है. अगर healthcare के अंदर है, education के अंदर है, retail के अंदर है, then it's kind of safe. But banking के अंदर भी kind of safe. But if it's something that is in tourism, something that's is in Canada Goose, which is a luxury brand, उसके अंदर जो contract jobs है वो इतनी safe नहीं होंगी. So one of the important guidance, when you have to decide whether to go for a contract job, is the industry that you're going in and the profile that you have. So last question, in contract jobs, do we have to pay HST? Yes. If it's a Canadian contract, then yes, क्योंकि HST का concept होता है कि you have to pay HST or you have to collect HST from the employers whenever you are doing Canadian services, giving Canadian services, right? So, और जो product है वो Canadian है. But if you are giving your services to an outside entity, which is outside of Canada, then HST does not apply. In case of Simran, she is doing in US, and therefore HST does not apply. There are certain businesses like mine, mortgages, where there is no HST. But अगर HST होना भी है ना, if you are liable to pay HST, you can actually charge HST to the company that you are contracting with. Most of the contracts have HST additional. तो अगर Ontario में है 13%, Calgary में हो तो 5%, and you can just charge the company that HST and just make sure, negotiating वाला जो question था, just make sure HST is included or it's addition to your hourly contract rate. That's all we have for today. I hope you like this video and it answered a lot of your questions about contract jobs. क्योंकि बहुत सारे questions we received were all very same and we tried to answer all of them. I hope you like this video. मिलते हैं अगले No Filter Thursday में. तब तक के लिए bye bye.